Hello everyone, welcome to PTE Reading Fill in the Blanks Real Exam Question Series. This is 38th video in this series. It means that हम already discuss कर चुके हैं 37 highly repetitive and real exam questions जिनकी probability बहुत high है आपके exams में आने की. First things first, now you can study in UK with PT. PT is accepted for UK and 90% of Canadian universities now accept PT academic. And if you are applying for family visa in UK, you can do it through PT Home. That is a new test which has been started. My name is Bhrat Brij and I have scored a perfect 90 in all the 10 skills of PT. Now students कहते हैं sir क्या हम 79 plus और 84 ले सकते हैं? The answer is yes. You can also score 8 bands अगर आप same strategies, tips and tricks को follow करोगे, which we tell you in this, and we have working templates for speaking, writing and listening. For reading, it needs a little bit of knowledge, grammar practice, and all we cover in this video series as well as in our online coaching as well as in institute coaching. So PT reading, first of all, it's of 32 to 41 minutes. आपको time management खुद करनी होती है, integrated time होता है, and this module is not scored out of 90, it's scored out of 47 marks. We are going to see the real scoring in a while, and it has 5 question types. And today's topic, reading filling the blanks, and is the second last question type. Okay, and this is the real PT reading scoring. If you see, speaking is going to contribute 22 marks, writing from SWT 10 marks आते हैं, तो reading जो है आपकी सिर्फ that is of 47 marks. And उसमें भी reading filling the blanks are of 15 marks. So if you are getting 5 RFIBs which are reading filling the blanks, it will be of 3 marks each. Okay. So I hope you are a bit clear with the scoring. And for reading filling the blank strategy, you have 2 to 2.5 minutes. अब क्या आपको उसमें सारे words पढ़ने होते हैं? The answer is no. You have to do the skimming because in 2.5 minutes you cannot understand the meaning. So these are some strategies which we are going to see how to crack them in 2 to 2.5 minutes. Okay. So this is today's topic. As usual, I'm going to give you 30 seconds to skim through this and then we are going to discuss it. Okay. अब आपको पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, we skim it. सबसे पहले हम RFIB को skim करते हैं to understand its gist, किस बारे में है, central theme या idea क्या है, then tone, positive है tone, negative है, neutral है, as well as tense, right, present tense है, past tense है और future tense है, और साथ में जो हमें options दिए होते हैं उनके लिए हम parts of speech की classification भी करते हैं. Parts of speech बहुत important हैं, we are going to see, and we teach all these things in our in-institute lectures as well as online grammar course. So let's get started with the skimming. Spending too much time in concrete jungle is bad for city something health and could have potentially catastrophic something for the environment. Conservation biologist Richard Fuller will argue during a seminar at the University of Canberra today. Dr. Fuller, something in biodiversity and conservation at the University of Queens and CSIRO, will explore the fact that although there's evidence that well-being of humans increases with something to surrounding biodiversity, the something for people to experience nature are declining rapidly in the modern world. Okay? सो यहाँ पे अब आप सिटी लाइफ के बारे में हम बात कर रहे हैं कि बुरा है, राइट, उसके कैटास्ट्रॉफिक मतलब बहुत ही ज़्यादा ग्रेव हो सकते हैं. क्या हो सकता है, वी आर गोइंग टू सी. कैटास्ट्रॉफिक क्या होती है, जब एक एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट होना होता है या बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, उस चीज़ को हम कैटास्ट्रॉफिक लेवल का कहते हैं. ओके, नाउ द फर्स्ट थिंग वी हैव डन द स्किमिंग.
नाउ वी नो दैट जो यहाँ पे टोन है कैटास्ट्रॉफिक की टोन है तो नेगेटिव टोन चल रही है ओके राइट और यहाँ सो मोर और लेस दिस इज हैविंग अ नेगेटिव टोन. Now we are going to do the parts of speech classification for our options. Okay. And the options which we have bring is verb. Daily क्या होता है जैसे daily routine. So daily is your adjective. Always remember adjectives come before noun. तो अब जैसे daily routine. Routine क्या है आपका noun है. Noun से पहले क्या आएगा adjective. So daily क्या है यहाँ पे आपका adjective. Dwellers. Citizens जो लोग रहते हैं उनको क्या कहते हैं dwellers. तो वो क्या है आपका noun. Lectures noun है. Lecturer noun है. Exposed अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है ईडी है तो सर ये वर्ब होनी चाहिए द आंसर इज नो दिस इज एन एडजेक्टिव ओके like exposed surface exposure is noun opportunities noun and plural consequences noun and plural realized is your verb late is your adjective okay so अब हमने parts of speech की classification कर लिया you are going to see the importance in a while okay so let's see the first blank. Spending too much time in concrete jungle is bad for something city health and could have potentially catastrophic something for the environment. Okay. So अब यहाँ पे city के साथ कौन सा word fit होता है? What you can do, we always use process of elimination POE. I say this as our best friend forever, right? जो भी options आपको लग रहे हैं, you can fit one by one and see which of them make sense. बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए सिटी ब्रिंक doesn't make sense city daily doesn't make sense city dwellers yes it makes a lot of sense and वैसे भी collocation होती है city dwellers means जो लोग वहां पे रहते हैं okay so that's why the answer for this one is going to be city dwellers and similarly अगर आप parts of speech से eliminate भी करोगे तो सारे options आपके eliminate हो जाएंगे okay now let's move on to the next blank we have selected dwellers over here नाउ इफ यू सी कैटास्ट्रॉफिक क्या था आपका एडजेक्टिव मैंने आपको बताया कि बहुत डेंजरस एडजेक्टिव के बाद क्या आता है एडजेक्टिव के बाद क्या आता है नाउन तो अब आपको यहाँ पे क्या फिल करना है नाउन फिल करना है ओके एंड साथ में यहाँ हैव लगा हुआ है अगर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो करेंगे विच इज अ पार्ट ऑफ आवर ग्रामर कोर्स यू नो कि आपको क्या फिल करना है प्लूरल तो आपको क्या आंसर फिल करना है यहाँ पे प्लूरल nouns. Now we are going to eliminate everything जो कि आपके adjectives हो सकते हैं, singular nouns हो सकते हैं, verb हो सकते हैं. अब आपके पास तीन options बचे हैं. Lectures, opportunities and consequences. And again, collocation क्या होती है? Catastrophic consequences, right? बहुत ज़्यादा भयानक consequences, नतीजे, right? So that's why we are going to fill consequences over here. See, with parts of speech and process of elimination, हम eliminate कर पाए बाकी options. तो at least अब हमें थोड़ा सा easy हो जाता है choose करना. Okay? So now let's move on to the next question. Dr. Fuller, something in biodiversity and conservation at the University of Queens. तो अब यहाँ पे डॉक्टर फ्यूलर की बात हो रही है राइट समथिंग इन यूनिवर्सिटी में वो क्या होंगे ओके बेसिकली जो यहाँ पे अगर आप कंटेक्सचुअल देखें तो यूनिवर्सिटी में आप क्या होंगे लेक्चरार होंगे ओके राइट बट यहाँ पे अब कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को लेक्चर्स और लेक्चरार लेक्चर्स इन बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन विल एक्सप्लोर द फैक्ट और लेक्चरार इन बायोडाइवर्सिटी द आंसर इज गोइंग टू बी लेक्चरार दैट इज हिज डेजिग्नेशन हम उस डेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं ठीक है लेक्चर्स हो सकता था बट जनरली हम यहाँ पे क्या बात करते हैं designation key okay so that's why we are going to select lecturer over here now अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या अब आपको ये सारी लाइन पढ़ने की जरूरत है द आंसर इज नो हम ब्लैंक से 4-5 वर्ड्स पहले और 4-5 वर्ड्स बाद के स्टडी करते हैं ओके well-being of humans increases with something to our surrounding biodiversity अब एविडेंस है कि लोगों की वेलबींग इंक्रीज होती है हमारी सराउंडिंग बायोडाइवर्सिटी से क्या ब्रिंग टू आर राइट डेली टू आर अब हम क्या यूज कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन लेक्चर्स टू आर एक्सपोज टू आर
Exposure to R, opportunities to R, realize to R, or late to R. The best answer is going to be exposure to R, कि हमारा जितना exposure होगा surrounding biodiversity से, biodiversity क्या होता है basically कि richness of life, like कितनी species हैं, जैसे plants, अगर बहुत ज़्यादा plants की species हैं, बहुत ज़्यादा animals की species हैं, तो हम कहते हैं वो environment biodiverse है, okay? So यहाँ पे exposure to our surrounding biodiversity is going to be the right contextual meaning. अब the something for people to experience nature are declining rapidly in the modern world. अब यहाँ पे अब आपको क्या फिल करना है, बट अगर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ध्यान में रखते हैं, यहाँ पे आर यूज हो रहा है। आर किसके लिए यूज होता है? प्लूरल्स के लिए। तो अब आप इसमें देखिए आपके पास प्लूरल्स कौन कौन से हैं। दिस इज ग्रामर, दैट्स व्हाई बेसिक्स ऑफ ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर पीटी रीडिंग so that you can achieve your target score. Okay, so what you are going to do, अब आपको यहाँ पे एलिमिनेट करने हैं सारे सिंगुलर्स। ओके, अब आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे हैं, लेक्चर्स और अपॉर्चुनिटीज। अब यहाँ पे द लेक्चर्स फॉर पीपल आएगा या द अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल आर डिक्लाइनिंग रैपिडली। कंटेक्चुअली आंसर क्या आएगा? अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल आर डिक्लाइनिंग rapidly. So that's why the answer for this one is going to be opportunities, right? Now let's see if all the answers are correct. Yes, all the answers are correct. So you saw how easy it can be अगर आपको ग्रामर के बेसिक्स पता हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिक्स पता हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पता है एंड आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यूज करके आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। Now, what is our reading filling the blank strategy? Our reading filling the blank strategy is based on context, lexical resource, and grammar. Context में skimming you have seen, forward reading, backward reading, tone analysis. Tone analysis you have also seen today, right? कैसे हमने find out किया कि negative tone था तो हमें कैसे answer find out करना है. Then lexical resource में collocations play an important role. जैसे city dwellers आपकी collocation थी, catastrophic consequences, collocation hai. So that's why you have to select those options only, right? Phrasal verbs, another important topic, and vocab. Vocab is something which we are going to build slowly and steadily. For grammar, we have a complete free grammar course for our online and in-institute students where we teach them parts of speech. आज आपने उसकी importance देखी है. Subject verb agreement, we have seen its importance also. Then prepositions, modals, articles, determiners, signposting words, tenses, irregular verbs or plurals, British English rules and sentences. This is the complete grammar course which we teach to our students. And always remember you have 2 to 2.5 minutes to solve your reading filling the blanks. In first 30 to 60 seconds, you can skim the content, and in next 90 to 120 seconds, you can use process of elimination as well as grammar rules to solve them. And all the strategies which we teach are validated and proven strategies. What is the proof? The proof is in the ticker below. You can see so many students have achieved their target score this week. If they can achieve, you can also achieve. And these are some of our recent success stories where students have achieved 90, 87, 86, 82, 81. So if they can achieve, you can also get to your target score. This is our WhatsApp number 8699121121. If you have any question, doubts, or if you want to take online coaching or in-institute coaching, you can contact us through WhatsApp. And do not forget to subscribe to our channel because we post such informative videos on a regular basis. We give wings to your dream.